Thank you. Class work. Is audio video clear achi sabu? Please do confirm me that first, then we will start the class. And आज तम मानकर टिके क्वेश्चन पैटर्न आज तम माने कुह सब बेले कि मैम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आनिबा पई तो आज तम मानकर सेमती ही क्वेश्चंस मानि छी हैला तो दैट तम माने पूरा खुशी हे जो क्वेश्चंस होप ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि जो माने भी क्लास रे प्रेजेंट अछो मते टिके बस जणे दियो कि ऑडियो वीडियो मैम एवरीथिंग इज क्लियर. So hello everyone, I am Sudipta ma'am. Welcome you all to Vedang Civil Services powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you everyone? Going good, doing well? Start करिबा आजिरा class, not wasting our time. चलो, the first question मते देखि दियो कोन अछि first देखो. Now with reference to the science and technology, consider the following statements. मैं science and technology को refer करी कि देखिबा दीटा statements. एई दीटा statement रु कोटा आपनकर right अछि या फिर कोटा wrong अछि आमे consider करिबा. Got it? चलो. First कोन कहि छी? The statement 1 देखो. Now technology transfer helps developing countries to reduce dependence on the imports. Obviously आपन मानकर technology जेति कि develop हबो डेवलपिंग कंट्रीज माने कोन करूचंती ना तांकर डिपेंडेंस रिड्यूस हे जिवो हन नै मते कुओ बिकॉज़ वी नो द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दैट एनेबल्स द लोकल प्रोडक्शन हन नै मते कुओ लोकल प्रोडक्शन उपरे एठी तार इंपैक्ट पड़िबो मछिरे लिखि दोछि रे एठी देखो कहा उपरे ना लोकल प्रोडक्शन उपरे तार इंपैक्ट पड़िबो क्लियर. After that कोन कहै छी ना indigenization of technology strengthens the strategic autonomy एटा हबर नै मते को फास्ट तमनु कोन कहिला ना the technology transfer that enables the local production with local adaptation and absorption of the foreign technology हबर नै मते को and एटी कोठी ना कोठी आपन कर रिड्यूस करबो कि इंपोर्ट बिल्स को improve करिबो कि बैलेंस एंड द पेमेंट्स को लाइक आपण माने कहि परिबे ये इंपोर्ट कोन करूची ना बीओपी को इंप्रूव करिबो यस और नो मते को दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इंप्रूव करिबो एग्जांपल आपण माने नै परिबे द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग द डिफेंस ऑफसेट्स एवरा को नै परिबे आपण माने एग्जांपल रे आपण माने को जदी डिफेंस रो किछि इक्विपमेंट्स हला डिफेंस रे आपण माने डिफरेंट गैजेट्स हला जदी हमें निजे ही इनबिल्ट इंडिजिनियसली तयारी करछु काहाडू किछि स्मार्ट टेक्नोलॉजी नै कि आसी कि ताहाले हमकु इंपोर्ट रो चार्जेस कम पड़िबो सेम वैक्सीन रो जदी हमें फार्मूला कोठ ओटे नै आछे द कोन कंपोजिशन द को जेनेटिक कोड हमें नै आछुचे ताहाले हमें ओन एटा को इंडिजिनियसली बिल्ड करी कि तार इंपोर्ट चार्जेस हमर कम हेई परिबो तो स्टेटमेंट 1 आपन का राइट अछि. Then कहला statement 2 कोन ना the indigenization of technology that strengthens the strategic autonomy ता माने कोन कहूची ना the strategic autonomy is just equal to the freedom of decision making without the external pressure हन नै मते को that means हमें कहि परिबा कि the indigenous defense the space and the semiconductor that the tech reduce the vulnerability and to sanction all of the vulnerabilities हमें कहि परिबा that means the core to आत्मनिर्भर भारत that means कोन ए टोटल आपन को कोन कहा ऊपरे ज्ञान दउची ना आत्मनिर्भर भारत ऊपर ही दउची तो एठी आपन कर दीटा जाक राइट हेसिबो both 1 and 2 next चलो तो सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड मुझे हा सब कहिले आपण मानु को एठी कोन टिके एक्सप्लेन भी कर देछि पीडीएफ रे मिलिसिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइंटिफिक डेवलपमेंट. अच्छा मते कहिलो साइंटिफिक डेवलपमेंट को नै कि एई सब भितर को स्टेटमेंट आपण कर राइट हबो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्विक consider the following statement the scientific कोन डेवलपमेंट को नै कि मते कहबो. फर्स्ट कोन कहिला ना the scientific developments often have on sorry yes the unintended social consequences आपन कर एमती हुए कि मते को yes
कारण साइंटिफिक डेवलपमेंट दैट ऑफन आम एग्जांपल नहीं परिबा द इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू द पोल्यूशन हुए ना नहीं मते को आमे तो हमर भलो पई हमर बेटरमेंट पई आमे कोन ना जे कोनोसी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री सब डेवलप कोथि पई होजी मैनकाइंड रो हेल्प पई बट लिटरली इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेट होची कहा सदा पोल्यूशन तो मैनकाइंड रोटा कोन हेल्प होची कि नो आमे या पई कोन इफेक्टेड होचे तो आमे कहि परिबा सोशल मीडिया एटा हमर कोन बैड साइड भी अछि गुड साइड भी अछि बट सोशल मीडिया जते आमे यूज करूचे पूरा माने एडिक्टेड हे गलानी टुवर्ड्स द सोशल मीडिया ताहाले ता हमर मेंटल हेल्थ ऊपर इफेक्ट पडुची तो मेंटल हेल्थ इशू आसुची हना नहीं मते खो तो एआई जेमिति आजिका दिन रे आपण मानकर एआई सेम रोल प्ले करूची तो एआई हमें कहि परिबा कि दैट लीड टू द एथिकल एंड द प्राइवेसी चैलेंजेस इन नाउ इट इज तो यस ता आपनकर statement 1 एठी राइट हे गला the scientific developments often have unintended social consequences आसी ही जाय unintentionally आसी ही जाय जते बेले कि आपण मान जानछन मोबाइल फोन जते बेले यूज हेतिला इन्वेंट हेतिला हमर कोन बेटर मैनकाइंड रो बेटरमेंट पय हेतिला बट ऑल ऑफ सडन से कोन हे गला डेवलप समस्त सब दिन सारा बैड साइड अछि एंड गुड साइड भी अछि नेक्स्ट सेंटेंस कोन कहूची The technology always leads to the reduction in employment. कहिला कि एटा कोन हमें राइट चूज करि परिबा कि कुह मते नो The technology causes the job displacement and not the permanent job loss. जॉब डिस्प्लेसमेंट करूची दैट मींस क्रिएट करूची न्यू सेक्टर आमे ताको पॉजिटिव एंगल ले सब बेले नेबा जते बेले हमें टेक्नोलॉजी को हमें एआई को हमें आईओटी को हमें मशीन लर्निंग को एक्सेप्ट करूचे इन दैट केस हमर कोन करूची ना न्यू न्यू जॉब क्रिएट करूची आईटी रे हैला एआई हैला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रे हैला तो एई सेक्टर रे सब आपनकर न्यू न्यू जॉब टाइप क्रिएट होची ना कि जॉब रो कोन परमानेंट ऑफ हो जाउची सो याकू हमें केबे भी कंसीडर करिबानी कारण एआई को सब बेले हमें पॉजिटिव एंगल गाइस देकी देखिबा हां ना नहीं तो एठी आपनकर स्टेटमेंट 2 कोन रॉन्ग हे गला तो ओनली वन विल बी द राइट आंसर सी ऑप्शन ए नेक्स्ट with reference to the indigenous technology in India consider the following अच्छा indigenous technology को नहीं कि इंडिया रे हमें कंसीडर करिबा what will be the कोन respective statement will be the right answer clear हां ना नहीं मते खाली कुह right the indigenous technology in India clear तास statement 1 कोन कहि छि ठीक देखि दियो ना indigenization reduces the foreign exchange outflow हां ना नहीं मते कुह कोन करूछि ना फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को तो स्टेटमेंट 1 अपन करे राइट हे जाउछ ना यस तो इट रिड्यूसेस द फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हाउ ना सपोज हमें इंपोर्ट करूछि जति की रिक्वायरमेंट हमर अछि सपोज वी इंपोर्ट द रिक्वायर payment in the foreign currency after that हमें domestic production भी करूचे as conserves तो कोन ना forex reserve तो फॉरेक्स रिजर्व अकॉर्डिंग हमें डोमेस्टिक कंजर्वेशन भी करूचे तो एटा आपनकर स्टेटमेंट को राइट एट हे गला इंडिजिनाइजेशन रिड्यूस करूची फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को देन कोन अछि ना इट इंप्रूव्स द सप्लाई चेन रेजिलियंस तो ये आपनकर सप्लाई चेन रेजिलियंस को इंप्रूव करूची कि improves the supply chain resilience yes or no yes ये भी करूची supply chain resilience को केमिति ना ये reduce करूची the dependence on the global disruptions बुझला नहीं COVID-19 टाइम कथा माने पकाओ the cheap shortages कथा माने पकाओ and हमें कहि परिबा import for the defense the pharma the electronics ए सब को जदी हमें नउचे ताहाले it improves the supply chain resilience तो both will be the right one both will be the right one next देखो now consider the following statements regarding the everyday technology what will be the right answer मते एठी कहिबो फर्स्ट सेंटेंस कोन कहि छि गाइस ना the LED technology reduces energy consumption compared to incandescent bulbs मते कुह जो incandescent bulb अछि जो LED bulb हमें सब लगौ छे तो मते को ये कोन आपनकर कोन रिड्यूस करि छि एनर्जी कंजम्पशन की यस आगुरु जो आपनकर रेड बल्ब जळुतला छोट बेले देखिथिबे सेटा आपनकर इलेक्ट्रिसिटी केते अधिक आसुतला केते अधिक वाट रो 100 वाट रो गोटे आसुतला एबे आपनकर कोन 10 12 max to max 20 watt रे काफी लाइट होची हां नहीं तो हमें कहि परिबा कि द LED consumes 70 to 80% less energy than the previous one than the incandescent bulbs तो yes इटा आपनकर राइट आंसर हेसिबो कोन ना lower the carbon footprint climate mitigations will be that much of affected as of now after that कोन कहू छी ना the digital payment मते कुह डिजिटल पेमेंट्स को निके हम कोन कहिबा first thing digital payments reduce the transaction cost and improve transparency yes hey paruchi
जेते कैशलेस आमे हेई परिबा reduce when we will go to the reduce cash handling cost that will so beneficial for us काहे कि कारण आपण माने जदी फोन पे रे काहा गोटे ट्रांजैक्शन सपोज आपण पाखटु जने पैसा नेछि तापर फर्दर कहबो मु तो पैसा नेइनी किंतु आपण जदी 100 रुपीस फोन पे करिसंते आपण देखै परिबे आई हैव गिवन यू दैट at this time, at this date, at this year, at this month, at this week, everything is very transparent. So हमें कही परिबा कि the reduce the cash handling cost that improve the transparency and the tax compliance also. That promote the financial inclusion, including आपनकर UPI method हो या फिर DBT method हो. So एठी आपनकर कोन ना both 1 and 2 will be the right one. Next मते कुह with reference to Indian scientific achievements consider the following statements. अच्छा scientific achievements को नहीं कि आम एठी sentence को consider करिबा. The first sentence कौन अछि ना India has successfully developed cryogenic engine technology indigenously. हाँ ना नहीं मत देखो India has developed the cryogenic engine indigenously. एटा कौन right की ISRO रो CE20 engine powers आपनकर कोन ना LVM3 किए ना लॉन्च व्हीकल मॉडल 3 LVM3 को हमें कहूचे ये आपनकर कोन ना हेल्प करिछि लॉन्च करिबारे हेल्प करिछि डेवलप करिबारे आफ्टर द टेक्निकल कोन ना डिनायल बाय द यूएस एंड रशिया फर्स्ट टाइम हमें कोन क्रायोजेनिक इंजिन रो हेल्प काहाटू ना रशिया टू टेक्निक हमें चाहूतिले को टाइप रा हमें टाको तयारी करि परिबा इवन यूएस टू भी हमें हेल्प मागिचे बट से माने हेल्प देई नथिले आफ्टर दैट हमें निजर CE20 मन रखिता CE20 व्हीकल एंड आपनकर सॉरी CE20 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपनकर LVM3 द्वारा हम एटा इंडिजिनियसली बिल्ड करिबारे सक्षम हेइसे तो स्टेटमेंट 1 आपनकर राइट हबो स्टेटमेंट 2 कोन अछि ना क्रायोजेनिक इंजिन्स आर मेनली यूज्ड इन द मिसाइल टेक्नोलॉजी मते कुह क्रायोजेनिक इंजिन आपनकर कोन ओनली मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज होछि कि नो दैट इज प्राइमरली यूज्ड इन द स्पेस लॉन्च व्हीकल नॉट द मिसाइल कोन हमें कहि परिबा ना प्राइमरली लॉन्च फॉर द स्पेस launch vehicles एतिके हम रिलेट करि परिबा को मते that is not missile so हमें कहि परिबा कि this one is wrong so only one will be the right one yes or no next question मते कुह अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वर तो मानु कहि दोछि ओडिशा सिविल सर्विस रा मानक पाखरे बैच अछि विश्वास बैच OCS प्री जो 2025 26 में प्रिपरेशन करूछंती तांका पई 6999 जदि विश्वास आपण माने प्री प्लस मेंस 2025 26 में यूज करूछंती 1.5 पर वैलिडिटी सहित 11999 मेंस बैच मेंस 2024 25 पे 1 ईयर वैलिडिटी सहित 8999 विथ ऑप्शनल बैच ऑप्शनल 2024 25 1 ईयर जदि आपण माने नउछंती 4999 apart from this आपण माने जदि नेबार अछि guys do contact to this number and get the help next question मते को consider the following statements about the technology diffusion को नै कि मते कोटा राइट आंसर हबो टिके कहिलो about the technology diffusion कोन कहि छी ना फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा स The technology diffusion is faster in open innovation ecosystem. तो ये कौन faster की open innovation कहूची माने कौन that encourage the collaboration, that encourage the faster spread or the faster spread of ideas. होना नहीं मते को जे कोनो से नुवा जिंस इनोवेट आपन कर होउची ताकू कोन कोची टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करूची ताकू टेक्नोलॉजी कोन चारियाडे स्प्रेड कर दो तो फास्टर वे रे स्प्रेड हेई पारुची तो आर कोलैबोरेशन पय आपन को डिफरेंट प्राइवेट कंपनी माने मर्जर पय रिक्वेस्ट भी पठै परिबे सो हमें कहिबा यस द technology diffusion is faster in open innovation ecosystem than the closer one, than the synchronized one. Next kon achi intellectual property protection can slow down the technology diffusion. मते कहो ये हेई परिबो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जे हमें क्लास रे पढी छे होना नहीं तो आईपीआर एठी आपनकर किछि पार्ट प्ले करू छी कि यस द आईपीआर प्रोटेक्शन कोन कहूची ना दैट द स्ट्रांग पैटेंट्स कैन स्लो डाउन द डिफ्यूजन करि परिबो नहीं जदि स्ट्रांगली कोनोसी पैटेंट को हमें फॉलो करू छे स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज रे हेई परिबो नहीं नॉट लाइक द यूएसए नॉट लाइक द चाइना बट नॉट लाइक द रशिया बट इन इंडिया हमें कहि परिबा यस इट कैन फॉलोड बाय द strong patent act even we can say the trade off between the innovation incentive and the accesses yes or no so एठी आपन कर कोन ना both हे जिवो right answer see next with reference to digital technology consider the following statements the digital technology again hame consider kariba and what will be the right answer see
ना with reference to digital technology consider the following statement. The statement 1 कौन अछि ना cloud computing reduces the need for local data storage. Is that so? Is that so? मते कुह yes the cloud computing कौन करूची ना data store करूची on the remote servers कौन जेते सब आपनकर remote servers माने अछंती. The data stored on the remote servers and we reduces the need for local infrastructure. The cloud computing amara is enough to handle all these data. After that कौन कहिला ना the edge computing increases the latency in data processing. एटा हेई परिबो कि मते कुआ edge computing रा किछि relation अछि कि the reduce the latency that processes the data near the sources or near the source हमें कहि परिबा that used in the कोठी ना ये आपनकर IoT रे यूज हबो कोठी ना IoT रे यूज हे परिबो. This is a autonomous vehicle, so ये आपनकर right हबो नै, only one will be the right one. Clear? Next मते कहिबो consider the following statements about artificial intelligence. अच्छा artificial intelligence that means AI कहिची ये according to sentence पढिबा कोन अछि right answer. Fast देखो कोन कहला ना AI systems can exhibit the algorithmic कोन ना bias. तो algorithmic bias सहित हमरो AI system exist करूची कि yes because AI trained on the कोन ना biased data according that biased outcomes later on. तो फास्ट आपनकर कहा ऊपर डाटा को आसीबो ना biased डाटा को नै कि हमर आउटकम ही आसे. एग्जांपल आपन माने नै परिबे द फेशियल रिकॉग्निशन एरर. सपोज आपन माने प्रॉपर फेशियल आपन माने कोन ना मोबाइल ले निजर फेस रिकॉग्निशन दे देसंती एंड आपन माने समटाइम्स मेकअप नै जाइछंती समटाइम्स कांदी सारी के आखी फुली जाइछि आपन माने देखुछंती मोबाइल रिकॉग्निशन हेई पारुनी. तो इन दैट हमें कोन कहि परिबा इन केस दैट इज द एरर आसी जाय दैट इज व्हाट ना दैट इज द बायस्ड आउटकम्स आसी जाय. सपोज आपन माने प्रॉपर डाटा देइछंती प्रॉपर जदी आसुनी ताहाले आपनकर फेस मैच करला नै तो फेशियल रिकॉग्निशन एठी कोन ना एरर ही जाउछि. तो एठी राइट आंसर कोन ना AI सिस्टम कैन एक्सिबिट द algorithmic bias. Next the AI applications are limited to automation only. अच्छा मते कुह AI कथा कोन कहिला ना AI only automation, is that possible? AI also used in healthcare, used in the language. आपण माने नीचे देखु नाथि चैट जीपीटी की जानतो किछि गोटे लिखि दियंतु ओडिया आपण का लैंग्वेज लिखंतु कुहंतु मेक इट translate it to in English, translate it into Chinese, translate it into कण फ्रेंड्स किछि भी लिखंतु आपनकर ट्रांसलेशन हेइ जिवो. तो लैंग्वेज भी हेइ पारुची. इवन आपण माने किछि कैलकुलेशन करि पारनंती आपण माने कुहंतु निजे ओडिया लैंग्वेज लिखंतु मु रामठु आनिथिली 500 टंका से हमकु देली 200 टंका रहिला मो पाखरे केते टंका ता पूर्वरु मो पाखरे थिला 100 टंका ता अकॉर्डिंग भी से तो मानकु कर दबो. सो फाइनेंस सहित भी आपण माने करी रिलेटेड ता सहित any big decision you are taking, you want to take but you cannot taking that आपण माने एठी हेल्प नै परिबे कहार ना AI रो. सो द डिसीजन मेकिंग इज आल्सो राइट बट एठी AI एप्लीकेशन आर लिमिटेड टू ऑटोमेशन ओनली. तो एठी लिमिटेशन हबो नाही because AI is a vast sector including the healthcare, including the language, including the finance, including the कोन decision making also. Next question चलो. तो एठी कोन हेछि बना only one. मते कुह with reference to Indian innovation ecosystem consider the following. मते कुह कहा सहित हम रेफरेंस नेबा ना with reference to Indian innovation ecosystem हैला. तो Indian innovation ecosystem सहित हम चलो सेंटेंस टिके पढिबा ना the startups play a key role in commercializing the research output. Definitely it will be the right one. हां ना नै मते को why not startups काहे कि startups काहे कि नुह त माने भाबिबो. स्टार्टअप्स हमें जानि छे दैट इज द ब्रीज रिसर्च जोथरे कि हमें मार्केट को स्टडी करि परिबा. थ्रू द स्टार्टअप्स हमें जानि परिबा को कंपनी रे केति के इन्वेस्ट हमें करू छे को कंपनी रो ग्रोथ केते होउची. दैट मींस मार्केट रे कहार डिमांड भलो अछि. दैट इज सपोर्टेड बाय द स्टार्टअप इंडिया कोन इनक्यूबेटर्स कहि परिबा ना नै. बट द पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हेइ परिबो कि पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैव नो रोल इन इनोवेशन. अरे यार भी तो रोल अछि. लाइक आपण माने कोन कहि परिबे ना आपनकर CSIR हेला आपनकर कोन इसरो हेला. तो ए सब को आपण माने नै परिबेनी कि DRDO हेला ए माने आपनकर कोन आर द इनोवेशन ड्राइवर्स. तो एठी हपनी पब्लिक सेक्टर रिसर्चर्स आपनकर दरकार ही दरकार. सो स्टेटमेंट्स कोन वन ओनली आपनकर एठी राइट हबो. Only one will be the followed. Next question मते कुआ. Very good evening प्रभात. मते कुआ consider the following statements about robotics. अच्छा robotics ऊपर उठी के आसिलो मते कुआ what will be the right answer here. robotics को नै कि the first sentence चला पढिबा हैला. कोन कहि छी first sentence
robotics integrates mechanical systems with sensors and softwares. Robotics कहले आपण माने कोन बुझुछो ना the combines of the mechanics, sensors and the software. The mechanics, sensors and software मिसिले एटा आपनकर combine ecosystem कहउची mechanical system. Combined mechanical system हबन ना yes तो system आपनकर statement 1 will be the followed one. Industrial robots विषय कहले industrial robots cannot adopt to changes in environment. एटा आपनकर हेई परिबनी कि no एमती हेई परिबनी ये भी आपनकर environment रे sustain करि परिबो if the modern robots are the cobots. ये जदि कोन ना cobots हेई थिबे ताहाले हेई परिबो so the modern robots जोरा को हमें cobots बोली कहउचे they are adopting using the AI and sensors. So industrial robots cannot adopt, that is fake. That can adopt. तो इथे कोन इथे भी only one हेसिबो. Clear? Yes. The next mate कहिबो with reference to nanotechnology consider the following. Okay, nanotechnology को consider करी कि मते टिके आंसर दबो. मते कुह first कोन अछि? Okay, the statement 1, the nanomaterials exhibit properties different from bulk materials. एटा आपनकर right answer हबो कि quickly मते कुह. Is that so? Right answer हबो कि nanomaterial always exhibits the properties different from the bulk materials. हां ना नै मते कुह. आपन मानु कोन कहि छि nanomaterial vary करे केते 1 ru 100 nanometer. ए भितरे से vary करे yes or no मते कुह. That means हमें कहि परिबा कि the surface area increases massively, the surface energy, the reactivity, the melting point, the strength, the conductivity ए सब आपनकर change हुए according to the nanomaterial size. Example आपण माने परिबे the gold at the nano scale can show the different optical properties. करि पारि ना नै आपण गोटे पीरियड जाय कि नानो स्केल एति कि छोटो 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 सपोज गोटे पीरियड गोटे छोटो पार्टिकल अछि गोल्ड रो ताको आपण माने 100 पार्ट कर देले गोटे पार्ट सेथरु नेले अगेन ताको 100 पार्ट कर देले नानो स्केल ले आपण माने देखिबे पूरा पूरा आहुरी स्मूथ आहुरी नानो पार्टिकल्स बोले गोटे पीरियड रे गोल्ड भी वाटर रे मिसेबल हे कि रहि जिवो तो हमें कहि परिबा द कलर चेंज हे कि ब्राउनिश कलर और रेडिश कलर आसी जाय गोल्ड रो तो गोल्ड इज आल्सो हमें कहि परिबा shows the different properties, different optical properties. Nano silver has strong antimicrobial action also. So, जो gold है, silver है, एगुड़ा को हमें use करी पारिबा. But here, the nanotechnology has applications in medicine and electronics. एटा अपन का right हबन नहीं मते कुआ? Yes, ये भी अपन का right. So both two only नहीं, both 1 and 2 will be the right one. Yes or no? जिबा next, very good. Because देखो आपण माने जानि छथि नानो टेक्नोलॉजी रो कोन मेडिसिन रे बहुत सारा यूज अछि जेमिति कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हैला नानो कैरियर्स हैला इमेजिंग कोन इंडस्ट्री जेते सब इमेजिंग एजेंट्स माने अछंती द कैंसर थेरेपी ए सब आपनकर थ्रू द नानो टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक्स रे आपण माने कहि परिबे नानो ट्रांजिस्टर्स हैला मेमोरी डिवाइसेस हैला सेंसर्स हैला क्वांटम डॉट्स हैला ए सब आपनकर नानो टेक्नोलॉजी रो इंप्लीमेंट्स होला नेक्स्ट मते कहिबो consider the following statements. Asa consider kara the following statements regarding the biotechnology. Biotechnology को टिके आसिलो मते कुह biotechnology involves the manipulation of living organisms. Yes or no? Biotechnology आपनकर involve करूछि कि biotechnology involves the manipulation of the living organisms. Yes or no? Yes, biotechnology involve करूछि manipulation of the living कोन करूछि ना नै yes because आमे जानि छे that include using what the organisms, the cells, the enzymes, the genes to make the products. Relate करि परिबा even आमे कहि परिबा that covers the traditional, that means the fermentation जोटा आपनकर कॉर्ड फर्मेंटेशन हुए खीर रु दही हुए इवन आपनकर ब्रीविंग हुए तो ए सब को मॉडर्न रे आपण माने कहि परिबे द कोन ना आरडीएनए ओके राइबोसोमल डीएनए जीन एडिटिंग टूल जोटा हमर यूज होची द कोन ना मोनोक्लोनल एगुडा को अपन नै परिबे एंटीबॉडीज ए मान को नै कि अपन माने कोन बुझी परिबे द बायोटेक्नोलॉजी हैज एप्लीकेशंस ओनली इन एग्रीकल्चर एटा कोन पॉसिबल कि बायोटेक्नोलॉजी ओनली एप्लीकेशन कोन एग्रीकल्चर रे अछि कि नो बायोटेक्नोलॉजी रो वेरियस एप्लीकेशंस अछि जोडा कि हम कहि परिबा हेल्थ केयर रे हैला जेमति कि वैक्सीन्स हैला इंसुलिन हैला ए सेक्टर हैला इंडस्ट्री हैला जेमति कि एंजाइम्स हैला एनवायरनमेंट रे अपन कर बायो कोन द बायो रिमेडिएशन ताको आपण माने नै परिबे एनर्जी रे आपण माने बायोफ्यूल्स को भी नै परिबे सो इट स्टेटमेंट्स ये रॉन्ग हे गला so only one will be the right one clear next mate को with reference to space technology in India space technology को नै कि मते के right answer दबो with reference to the space technology in India मते कहिबो
अच्छा तो फर्स्ट सेंटेंस कौन कहला with reference to कौन ना स्पेस टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग मते टिके आंसर यार दब फर्स्ट कौन कहला ISRO has developed the reusable launch vehicle so मते कुह ISRO आपनकर reusable launch vehicle develop करिछि कि yes or no मैम जो क्लास होची को चैप्टर होची ये टोटल मिक्स चैप्टर होची नैनो टेक्नोलॉजी रे क्वेश्चन अछि स्पेस टेक्नोलॉजी रे भी क्वेश्चंस अछि एग्रीकल्चर रे भी क्वेश्चंस अछि एंड आपनकर न्यूक्लियर रे भी क्वेश्चन अछि मिक्स क्वेश्चंस तो मते को ISRO has developed reusable launch vehicle technology yes or no ISRO has tested the reusable launch vehicle तमाने कहतिली पुष्पक एग्जांपल तमाने को पुष्पक देइथिली जोटा कि हमें reusable launch vehicle टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कौन कहतिले ना RLVTD बोली कहउथिले टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमर थिला द टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन लाइक द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स केमिति पुष्पक कथा तमानु कहिथिली द इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस द सक्सेसफुल टेस्ट अकॉर्डिंग हम याकु नउथिले द रियूजेबल तो या अकॉर्डिंग एटा कोन राइट आंसर हबन नै मते को यस द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ स्पेस मिशन रियूजेबल लॉन्च व्हीकल माने कोन जेते बेले हमें किछि लॉन्च व्हीकल स्पेस को पठौचे से माने पुनी वापस आसीबे आमे ताको पुनी यूज करि परिबा जति आमे जते थर तयारी करूथबा केते कॉस्ट हमर सरुची कहला जति एतिकी थर आमे इन्वेस्ट करि कि गोटे व्हीकल तयारी करूछे तापर सैटेलाइट तयारी करूछे सैटेलाइट तो हमर वापस आसुनी जति लॉन्च व्हीकल को भी वापस आनी पाने तो एते पैसा हमर खर्च होउची एते इन्वेस्ट आमे करछे तो फ्रूटफुल केमती हेबा एते हम पाखु कोन रेवेन्यू आसीबो कोठु So the reusable launch vehicle reduce the cost of the space mission because reusing stages reduces the cost of the manufacturing each time. गोटे थर तयारी हैला मझरे कोन टिके आपन रिपेयरिंग खर्च आसीबो दैट्स इट जोटा कि आपन स्पेस एक्स रे यूएस रे डेफिनेटली चली नासा वाला ऑलरेडी एटा को इंप्लीमेंट करूछंती तो ग्लोबल एग्जांपल अपन नै परिबे द reusable rockets lower the launch cost and increase the launch कोन frequency next so it happen right answer kon reusable launch vehicle reduce the cost yes so both 1 and 2 मते को consider the following statements about the satellite applications तो या भितर मते कहिला consider कलो कोउता right answer हबो satellite and disaster को नै कि मते कहिबो हैला फर्स्ट सेंटेंस कोन देछि ना satellites are used in weather forecasting होछि ना नै मते को weather forecasting पई हमें satellites मान को यूज करू छै ना नै मते को yes the meteorological satellites both correct है जीवो sure both correct है जीवो अच्छा हो देखो फर्स्ट सेंटेंस कोन कहै छै ना satellites are used in the weather forecasting आपनकर क्लाउड्स हैला आपनकर साइक्लोन्स हैला रेनफॉल हैला टेंपरेचर हैला these are the vital for the early warnings तो एटा आपन कोन ना satellites थ्रू रे हे पाउछ नेक्स्ट कोन अछि ना satellites have no role in disaster management एटा भी आपनकर राइट है जीवो प्रभात satellites कोन आपनकर disaster management ए किछि रोल प्ले करूनी no the satellites are crucial for the damage assessment for the flood mapping for the cyclone tracking for the wild कोन जेते सब वाइल्ड फायर होचे आपनकर वाइल्ड फायर मॉनिटरिंग करिया पई कम्युनिकेशन करिबा लागि when the कोन ग्राउंड नेटवर्क फेल हे जाय तो एठी आपनकर ए सेंटेंस ता केमती राइट होई जिवो satellites have a main role in disaster management हेतिले आपन माने राइट ठी मारि थाते बुझियला ना नाही मते को नेक्स्ट मते को with reference to information technology consider the following मते आसा IT को कंसीडर करी कि को सेंटेंस रा राइट हबो मते कहिबो फर्स्ट देजी IT improves the governance through e-governance initiative हो ना नै मते को IT आपनकर improve करूछि कि yes the IT enables the service delivery transparency efficiency accountability so example हमें नहीं परिबा online certificates DBT the portals ए सब आपनकर कहा थ्रू रे आसीबो ना that is the IT improves the governance through the e-governance initiatives होना नहीं मते को then कह जे IT always increase the digital divide मते को IT कोन सब बेले आपनकर digital divide करे कि yes or no मते कहिला IT कोन सब बेले आपनको digitally divide करि दिए yes IT always increase that no so always make it wrong but hame कहि परिबा IT can reduce the divide through the affordable smartphones hela the digital literacy hela आपनकर कोन the broadband expansions hela या थ्रू रे हमें कहि परिबा sometimes करे but ए जो always word जोगु हमें याकू कंसीडर करिबा नै so one only will be the right answer next मते को consider the following statements regarding the cyber security को नै कि मते कहिला को आंसर ता राइट हबो
Consider the following statements regarding the cyber security. Quick. Wow. Has sentence कौन देइछि? Now the encryption helps in securing the digital communication. एटा अपन का right हबो की? Yes. That converts the plain text into the कोथिरे ना the keyword text. Ensure the confidentially or supports the secure the banking, the messaging. आपनकर जो आसुची कोन HTTPS मते कहंतु आपनकर जो HTTPS रे आपन माने जानु चंदी एटा आपन माने कोन ना कंप्यूटर रे पढी भी थिबे HTTPS विषय रे तो ए माने कोन आपनकर जो कोड वर्ड थाए आपन माने देखिथिबे आर्मी कैंप रे जो माने थांती कोन ना डिफरेंट कैंप को आपन माने कोड वर्ड या फिर डिफरेंट कंट्री रे हमर जति जो स्पाइंग एजेंट्स माने थांती से माने गोटे डिफरेंट कोड हम पाखु मेसेज पठांती एटा कोथि पई बिकॉज़ ऑफ द साइबर थ्रेट तो ए मानन को बंचिबा पई ट्रैक न हेबा पई हम एटा यूज करूचे so the cyber security right habo na nahi mate kuo to sentence 1 will be the right one next mate ko cyber security threats are only external in nature eta kon only external ki threats can be internal too so only external kahiba na am murkhami so option 1 will be the right one next mate kuo with reference to intellectual property right that is IPR intellectual property right according to sentence ta right haba mate टिके कहिबो has देछि the patent protects the कोन innovations sorry inventions the patent आपनकर कोन inventions मान को protect करूछि कि yes the inventions means the new product हैला the process with intent माने कोन the inventive steps हैला plus the industrial माने applicability हैला तो ए सब को नै कि ये कोन patent आपन को गोटे exclusive right provide करे for the limited period so yes आपन मान ताकि चाहिले further renewal भी करि परिबे तो एटा आपन राइट हबो बट मते कहलो copyright protect the industrial design copyright आपनकर industrial design को protect करिवो कि no not at all तो copyright आपनकर कोन प्रोवाइड करूची ना the literacy the artistic work suppose आपन माने बुक कोटे पब्लिश करिसंती आपन माने गोटे गीत गाइछंती लिटरेसी हैला the artistic work हमें कहूचे ताकू artistic वर्क को हैला तो एई मान को नै कि कोन कहूचे ना आपनकर डेवलप होउची द बुक्स हैला द म्यूजिक हैला द फिल्म्स हैला द सॉफ्टवेयर हैला ए मान को नै कि आपनकर हुए इंडस्ट्रियल डिजाइन आपनकर कोन कहूची आर प्रोटेक्टेड ऑन द डिजाइन लॉ अकॉर्डिंग लेके एस्थेटिक कहूचे द ऑर्नामेंटल फीचर्स कहूचे ता अकॉर्डिंग आपनकर ए पळे आसीबो हैला सो इट ओनली वन विल बी द राइट नेक्स्ट मते को consider the following statements about the patents according मते कहिलो what will be the right answer the patents कहिले कोन बुझुचो ना ड्यूरेशन एंड इनोवेशन होना नै मते देखो patents means कोन ड्यूरेशन एंड इनोवेशन that means कहि परिबा कि कोन कहूची एठी ना फर्स्ट सेंटेंस patents are granted for a limited period yes 10 years हैला 20 years हैला the standard patent act आपनकर कोन ना standard patent term आपनकर 20 years time validity for the filling subject to the fees and conditions को नै कि and हमें कहि परिबा that is the core principle time limited that is the monopoly in the exchange for the disclosure हमें कहि परिबा the patent act the patent protection encourages the innovations एटा हे परिबा कि yes that provides the incentive to invest and in the research and development होना नै मते को right answer so both 1 and 2 will be the right one next मते को with reference to indigenization in defense technology indigenization of defense technology according मते टिके आंसर देला कोन कहूची फर्स्ट सेंटेंस कोन अछि देखो ना फर्स्ट कहछि इंडिजिनाइजेशन एनहांस द नेशनल सिक्योरिटी इंडिजिनाइजेशन करले ही हमर नेशनल सिक्योरिटी बढ़िबो आमे जदी निजे ओन किछि डेवलप करूछि हमकु काटू किछि डिपेंडेंसी ही नाही तो हमर एठी कोन ना नेशनल सिक्योरिटी बढ़ुछि नै मते को दैट एन्श्योर द अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द वार during माने sanctions हे साला परे reduce the hidden vulnerabilities in imported systems that means हमें import उपरे कोन dependency रहिबानी so yes sentence 1 will be the right one next it reduces the dependence on the foreign supplies obviously one तो हमर जतले indigenous development रो क्षमता निज पाखरे आसी जिवो हमें foreign exchange उपरे हमें foreign import उपरे depending हमें करिबा the reduce it will be reduce the import reliance हमें कहि परिबा that improves the strategic autonomy and the supply chain also so both right हे जिवो एठी कोन both right हे जिवो प्रभात okay next आसा consider the following statements regarding the supercomputers अच्छा मते supercomputers मान को नै कि को सेंटेंस ता आपन करे एठी राइट हे जिवो
The supercomputers are statements कौन देछि ना supercomputers are used for weather prediction. Supercomputers आपनकर weather prediction पे use करा जाय कि yes or no? The weather, the climate, climate models that require the massive computations. होना नहीं मते को numerical simultaneous also. So next India has developed indigenous supercomputers. Indigenously बहुत सारा import for the e-sovereignty due to the past technical कोन ना denial पाई हमर मते कुह मते सपोज एबे मु पानी ग्लास टे मागली रोशन मते पानी आनी के देलानी ता माने कोन मु तंटी सुखी के मरि जेबी ना मु निजे जाई के पानी आनी के पीबी सो डेफिनेटली एटा ही हबो जते बेले आपण जन को पे डिपेंडेंस थांती आपण को से बार-बार मना करे सेते बेले हमर इंडिजिनियस क्षमताटा बढ़ी जाय सो यस द इंडिया हैज डेवलप्ड लॉट ऑफ नेक्स्ट मते को विथ रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नै कि मते कहिलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नहीं कि मते को आसा मते कुह फर्स्ट सेंटेंस कोन देछि फर्स्ट सेंटेंस देछि द क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज ऑन डिमांड availability of computing resources हां नहीं मते को yes the core cloud features आपनकर कोथि आसीबो ना on demand scalable the pay as you go कोन ना पे as you go remote access according एटा आपनकर कोन ना कंसीडर करा जिवो स्टेटमेंट राइट हे जिवो नेक्स्ट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग नेसेसरीली रिक्वायर्स द डाटा टू बी स्टोर्ड विथ नेशनल बाउंड्रीज एटा हे परिबो कि नो देयर इज नो इनहेरेंट टू क्लाउड किछि इनहेरेंट आपनकर दरकार हबो कि दरकार हबोनी दैट डिपेंड ऑन द पॉलिसी डिपेंड ऑन द कोन सेक्टोरल रूल्स आपनकर कहि परिबा सम डेटा that is locate माने कोन जहा लोकलाइजेशन हेसी लॉ एग्जिस्ट ऊपर बट नेसेसरीली is wrong necessarily no but it can be happened so one will be the right only one next मते को consider the following statement about artificial intelligence ऊपर आपनकर को सेंटेंस राइट हबो मते को फर्स्ट सेंटेंस कोन दे देछि Now sentence 1 the AI systems can learn from data without explicit programming eta he jibo ki mate ko machine learning that learns the patterns from the training data example apan man nei paribe to spam detection ku to ye seta apan he jibo the AI systems are completely free from the human biases तो मते कुह AI system आपनकर completely human free हे जिवो कि no the bias enters via the data and the labels and से data को input के करे human ही करे that is so simple as it the historical discrimination पे अपन मान देखिबे AI can amplify it but it cannot be denial so no both one will be the right sorry only one will be the right both हबो नहीं प्रभात बोथ हबो नाही AI systems are completely free for human beings हबोनी AI systems आपण माने चैट जीपीटी रे जदी प्रॉम्प्ट ऐड न करिवे से आपण को प्रोवाइड करिवो नाही इंफॉर्मेशन तो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन रे आपण को किछि हेई परिबो नाही नेक्स्ट मते कुह नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to machine learning consider the following machine learning को नै कि मते कहिलो Now, machine learning is a subset of artificial intelligence. एटा हेई परिबो कि artificial intelligence रा machine learning गोटे subset हो ना नहीं because AI हमें जानचे this is a कोन ना this is a broader goal having a intelligent behavior. Machine learning is कोन learning from the data that means yes. Then अच्छी supervisor learning requires labeled database. So obviously yes supervisor हबो ना तो the labels हमें कहि परिबा that correct output आपन को प्रोवाइड करिवो आपन माने जहा भी प्रॉम्प्ट दोसंती एग्जैक्टली आपन को सेम इमेज से प्रोवाइड करूची सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूची द इमेज द लेबल्ड द कोन एनीथिंग द कैट हैला डॉग हैला टाइगर हैला एनिमल्स हैला आपन माने को फॉर द ट्रेनिंग पर्पस आपन को प्रोवाइड करूची तो ये सब बोथ one and two will be the right one next मते को consider the following statements regarding quantum computing को नहीं कि मते को फर्स्ट सेंटेंस कोन देछि ना quantum computers use qubits instead of classical bits मते को qubits को यूज करा जाय कि bit रे आपनकर कोन यूज हुए 0 और 1 यूज हुए qubit can be a mixed state तो आपनकर कोन ना 0 and 1 it यूज हुए तो yes quantum computers rely on principle like
superposition. Yes or no? The quantum computers rely on the superposition. Superposition plus kono na entanglement enable the computation advantages for the specific task. So yes, so ye apankara kono obviously right. Both 1 and 2 will be the one. Next. मते को with reference to semiconductor technology consider the following. Consider करो दीटा following sentence को मते को what will be the right one. First sentence को इच semiconductors are essential for manufacturing electronic devices. तो मते को सेमीकंडक्टर्स कोन सेतिके इंपोर्टेंस की जेकोनोसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जेकोनोसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैन्युफैक्चर करबा लागि बिकॉज़ सेमीकंडक्टर्स माने कोन चिप्स तो चिप्स आर द कोर टू द फोन्स जेकोनोसी इंस आपण माने तयारी करन चिप्स निहाती दरकार द कंप्यूटर्स हला द व्हीकल्स हला द डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स हला ई सब पय आपनकर सेमीकंडक्टर्स निहाती दरकार सो ये सेंटेंस 1 विल बी द राइट वन. Okay, next mate ko indigenization of semiconductor manufacturing the enhanced technological sovereignty. तो एटा अपन को राइट हबो कि मते को होना नहीं. Indigenization of the semiconductor that manufacturing enhance the technological कोन sovereignty. Yes or no? Yes, that ensure the supply security, that reduces the dependency, that support the defense plus the economy. So both 1 and 2 will be the right one. Next mate ko consider the following statements about the 5G technology. समस्ते तमाने 5G यूज करछो बाय डिफॉल्ट एबे 5G कोन फ्री अछि आगु का हुरी कॉस्ट हबो तमाने भी नाम नबो व्यस्त हुअनी बट एबे मते कुह 5G provides the lower latency compared to 4G. latency लो करूछि की yes लोयर latency कोथि पे हमें कहिबा कान त माने सुनछो लोयर latency नै रे latency लो हेले केमति हबो latency माने त माने बुझनी तमे जानछो 4G to 5G कोथरे कम हे परिबनी अरे लोयर latency हेले लो latency that supports the real time applications that means हमें कहि परिबा remote surgery हेला the autonomous systems हेला एई सब अपन कर real time execution हबो जेते latency लो हबो जेते ऊपर को में 5G 6G 7G जिबा latency rate सेते की लो हबो तो 5G provides lower latency compared to the 4G. Yes, the 5G has application of IoT. Obviously, the supports the massive device connectivity, the fast response, the smart cities, the industries 4.0. तो ये सब को अपन करो कौन both 1 and 2. Next चलो. Oops. मते next को with reference to कौन पचारिछि Now, with reference to robotics, consider the following. Robotics super question achi ko. Now, robots can be programmed to perform repetitive tasks with precision. Hapana nahi. The core industrial advantage. Yes. Yes. The repeatability, the accuracy, the consistency. So, ये सब जिन सा अपन कर maintain होची. But robotics has applications only in the manufacturing industry, manufacturing sector. एटा है परिबा कि no अपन कर कोन ना UAVs रे भी अछि. So both sorry only one will be the right one because used in the healthcare also robots are used in the healthcare sector. Surgery रे अपन कर कोन robots माने यूज होउचंती. Defense रे अपन कर unmanned aerial vehicles unmanned aerial vehicles UAVs रे भी यूज होउचंती. अपन कर लॉजिस्टिक जोटा कि वेयर हाउस कोन बोट्स रे यूज होउचंती. एग्रीकल्चर रे ड्रोन्स माने अपन कर यूज होउचंती. द स्पेस एक्सप्लोरेशन रे भी यूज होउचंती. तो हाउ कैन बी द सेंटेंस वर्ड 2 will be the right one. नेक्स्ट मते को consider the following statements about the space technology. मते आ भितर कुह स्पेस टेक्नोलॉजी को नेकी राइट कोटा हबो क्विक sentence आसा पढा मते कुह ना the remote sensing satellites are used for the resource mapping. तो मते कुह remote sensing satellite अपन कर कोथि पय दरकार ना land mapping पय दरकार. वाटर कोठी केते यूज होईची वाटर रिसोर्स कोठी केते स्टोर हेकी अछि ताको मैपिंग करबा लागि फॉरेस्ट कवरेज को मैपिंग करबा लागि मिनरल्स को मैपिंग करबा लागि एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग करबा लागि तो डेफिनेटली आपनकर कोन ना मैपिंग पय. नेक्स्ट अछि द नेविगेशन सैटेलाइट्स हेल्प्स इन डिजास्टर वार्निंग सिस्टम. देखो नेविगेशन सैटेलाइट्स आपनकर कोन करिवो navigation satellites are mainly provided for the positioning, for the navigation, for the timing. The PNT method को तमाने navigation satellite को मन रखो that is the PNT. हाँ ना PNT that the disaster warning is mainly from meteorological earth observation satellite. Navigation helps in the response and the coordination. है ना चल next so only एटा अपन कर भूल हबो only one with the right. नेक्स्ट मते को with reference to ISRO missions consider the following. मते को ISRO रो मिशन को नेकी कंसीडर करो को स्टेटमेंट आपन कर राइट हबो
Now, first India has demonstrated Mars orbit insertion capability. Yes or no? MOM, जोटा कमी जानिचे famous Mangalyaan mission that successfully enters the Mars orbit, हो ना नहीं? So that providing the deep space navigation and the insertion method. So yes, the statement 1 is the right one. Next कौन कही ना Mars mission have no scientific objectives. The Mars mission में किसी scientific objective नथिला कि the Mars mission study the atmosphere. हाँ ना नहीं हुआ that surface that methane present अछि ना नहीं water history कौन climate evolution केबे हेला एबे तो आपनकर मार्क्स रे lightning भी देखिबा को मिली छी हाँ ना नहीं तो ए सब ऊपर ऑब्जर्व हबो नाही कोन पई so only one will be the right one. Clear? Next question मते कुह ना consider the following statement regarding Gaganayan mission. त मते Gaganayan mission को नेकी कहिलो Gaganayan mission को नेकी कुह फर्स्ट सेंटेंस कोन कहि छी ना it is India's human space flight program. Yes or no? तारा goal कौन की ना send the Indian astronauts to the low Earth orbit and return safely to the back to the Earth. That means कौन ना ये आपनकर 4 days जाइकी astronauts माने space रे रहिबे survival condition से मानकु सेठी केति की survival condition रहुछि ना नहीं तांकर climatic condition कौन ए सब आपनकर later on study हबो. So yes, this is India's human space flight program and India's first human space flight program. Next it aims to send astronauts to the moon. कौन both हबो काहे कि इथे आपनकर moon कोठी मेंशन अछि मु पता मानु कहिली आपनकर इठी moon नाही इठी आपनकर low earth orbit रे astronauts को पठा जिवो सो एटा आपनकर भूल moon बोली मेंशन नै space को पठा जिवो Gaganayan mission moon mission is separated long term target हाँ नहीं Gaganayan is focused on the कौन ना only the low earth orbit ऊपर से focused करूची. Clear? बुझी पाइल ना नहीं मते कुह yes or no. ये both हबो नहीं प्रभात के माइंड खटाओ. So right answer कौन ना statement 1 is correct. The Gaganayan mission is indeed India's first human, but statement 2 is incorrect. The mission aims to send astronauts to a low Earth orbit around 400 km altitude for a short duration, typically 3 to 7 days, not to the moon. The goal of landing an Indian on the moon is a separate long-term objective set for 2040 ପାଇଁ एटा दिया जाय छै. PDF टा दिया जिवो Telegram channel रही छी आपण माने जॉइन हेले PDF दिया जिवो. Before that त मानु कहू छी 5 टा रु 6 टा मोर साइंस एंड टेक अछि सोमवार बुधवार एंड शुक्रवार त मानकर क्लास एंड these are the classes जोडा other teachers माने आपनकर नौ छथि. बाकी एटा रहू छी Vedang OCS रो सिविल सर्विस रो Telegram channel आपण माने एठी जॉइन हेले क्लास रो PDF पाइ परिबे. That's it. Theory class IS the motion YouTube रे theory class is not possible. Theory class provide होउ छै आपण मानक मैम गवर्नेंस ऊपर टिके क्लास आणंतु ना प्लीज मोर डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक मु त मानक पई केमति गवर्नेंस रे क्लास आनी गवर्नेंस रे क्लास त मानकर मे बी सुजाता मैम आनीबे he is from the polity background and theory class पई IS the motion application class already theory class chali chi. Thank you so much guys, have a good day, take care of yourself, but first of all do prioritize your parents. This will be your first priority, no one else in the world. Thank you so much for all your attention to be present in my class and rati 10 टा class रे आपण मानक पई बहुत important class अछि regarding science and tech strategy and resources पे गोटे वीडियो आणत. अच्छा हो ठीक I will try that. Thank you so much guys, राति 10 टा क्लास रे प्रेजेंट रहइबो बिकॉज़ सीजीएल आपण मानकर चाहू चाहू मासे पळेइबो नोट माने एप्लीकेशंस भरिबा डेट भी पळेइबो सो क्लास बहुत इंपोर्टेंट ताकू जॉइन हुआ आज राति 10 टा रे. थैंक यू सो मच, हैव ए गुड बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर.